So I wanted to show you guys the gameplay of this mind-boggling game Sherlock Holmes Crimes and Punishment, which leads our bus direct to the detective town. I haven't played any Sherlock games firsthand. Let's dive in. In memory of the Ukrainian Heavenly Hundred. Nice intro. मैंने शेरलॉक सीरीज तो देखा है बट देखते हैं माइक्राफ्ट ये मेन विलन The fate of the Black Peter. Deduction space icon appears each time you find a new clue. An important way you can always open the casebook and check the dialogue log. Okay, boss. यही है क्या Sherlock? Oh bye. Holmes. उसके पास जाना है. Okay. Holmes, will you stop that? You are utterly mad. एक कुछ केस के बारे में सोच रहा था क्या? सिमुलेशन कर रहा था Stop, क्या? Holmes. Watson Is वो that तो you, पी दिख रहा Watson? है. Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded. Watson, quiet please. I'm trying to concentrate. Confident step, clinking handcuffs, policeman. 9 step avoided. Oh, Ah, Lestrade. What is it this time? You oh, can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. sorry. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The Merry Men struck again. What have they done this time? Sussex तो medieval age name है शायद I'll मेरे meet ख्याल you से. at Woodman's Lee, Mr. इंग्लैंड में कोई तो पुराना I should जगह. help Mrs. like- Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. ओह अकेले जा रहे. ए ऐसे कैसे चल रहा है भाई? ओह कैमरा थोड़ा. Investigate the murder of Peter Carey. Inspect the crime scene at Woodman's Lee. Select a suit to wear your personal borrow. Join Leicester at a task. Select a suit. A wardrobe ये है क्या?
सेंसी बदल लेता हूँ थोड़ा सा। गंदा आवाज है बहुत। ओ मेरा रूम है, तो इधर ही मेरा ड्रेस भी रहेगा शायद। ओके वार्डरोब। ओजी दिखना चाहिए, मॉर्निंग गाउन। हाँ ये ओजी दिख रहा है ना भाई। ओह ये रोटेट किससे करते हैं यार, शे तो पीछे पोनी रहेगा तो मस्त रहेगा। माफ, एलेनॉयर का बंदा लग रहा है। ओह कैप वैप नहीं चाहिए, एकदम ओजी बंदा लगना चाहिए। यही ठीक है। से गंदा चश्मा तुम्हें मिला नहीं लहर। पिंकी लग रहा है यार। आ घटिया। नहीं चाहिए छोड़। ओके ओह ठीक है, अभी के लिए ठीक है बस ऐसे चल। मिसेस हडसन। What a mess! What a ए भाई terrible ये भी mess! नॉर्मलाइज्ड बुड्ढी। किधर जाना है? यहाँ पर ही जाना था शायद। मैं टैब दबा के यहाँ पर ना टास्क इंस्पेक्ट द क्राइम सीन। हाँ बराबर, सीधा इधर टीपी। ओ भाई इतना मोशन ब्लर। ओके पहुंच गया क्या? कुछ कन्वर्सेशन तो मिस आउट नहीं कर रहा ना मैं? फिर लोचा हो जाएगा अगर मैं कुछ मिस आउट किया तो। ओके पहुंच गया। Mr. Holmes, ओके फ्रेंच गार्डन It एग्जामिन। seems that the garden was well maintained. यस It seems that the garden was well maintained. ये पर्सपेक्टिव के साथ। ओ आर ओके। Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. as soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. ये दबाना है क्या? ओ गलत स्कैन हो गया भाई। कैमियो। ओ कैथोलिक रोजरी। ये मस्त फीचर है यार। गार्डनिंग ग्लव्स। ओके बर्ड हाउस और क्या है? फॉरवर्ड ही मारना है जाता है। स्किप टू एग्जिट। ओके ये अपन ऑब्जर्व करते हैं उसको क्या क्या है। कुछ तो एक बच गया था। Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the 2 time. बजे हगने गया रहेगा भाई, क्या तुम लोग भी। इवनिंग बिफोर द मर्डर। Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well,
Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. 10 o'clock. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Okay. इसको कितने बार ताड़ते रहूँगा भाई? क्या ताड़ना है और कुछ रे? ए भाई, ये कुछ तो मिसिंग है. बैकवर्ड आंख, मुंह, ये हैट नहीं. कुछ तो एक मिस हो रहा है भाई. बटन नहीं, गलत, बहुत गलत. और कुछ तो मिस हो रहा है. इस पे कुछ है क्या? यही है भाई. क्या ये क्रेस्टेड वो तभी अनलॉक नहीं हुआ. ओके. Everything. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? क्या ये? गलत कर दिया यार. You have indeed suffered a great Okay. loss, Mrs. ये Carey. बहुत. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Oh, okay. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? हाँ, क्यों दबा दिया मैंने? Tab browse evidence. Judith Carey she's a very religious Christian Catholic woman and undertook a Saint James Way pilgrimage. Pilgrimage, yes, pilgrimage. मिल गया ना आंसर भाई. चल निकल. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. भाई क्या दिमाग I लगाया? believe that you met Peter Must- Carey must. as a young sailor there. बेनेडिक्ट कम्बरबैच रहता तो गेम और होलसम होता था. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. ओके, अभी क्या करना है? कैरेक्टर ये केस के लिए मेरे को कितना टाइम लग गया भाई? वापस घर चले जाऊँ बोलते हैं. इन्वेस्टिगेट द मर्डर, इंस्पेक्ट द क्राइम सीन एट वुडमैन लीज. ओके, यही कर रहा हूँ मैं. तो किधर तो क्या है ये? इसमें क्या करना है? ओके, पढ़ लिया मैंने सब. घर के अंदर जाके देखना है क्या? वैसे क्राइम सीन ब्रदर. हे पुलिस वाले. ओ बराबर. हाँ, टॉक. Mr. Holmes? यस मिस्टर पुलिसमैन. Mr. Holmes? यही डायलॉग आता है क्या इसको? टोपी. बराबर. It seems that the garden was well Well maintained. maintained. EA Sports the game वैसा बोल रहा बंदा. Peter Carey's body is Inside the camp. cabin. ओके चल, मैं जा रहा हूँ अंदर. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I lock. Ah, Hello. what is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. ओह, इस पे ही समझ जाता है भाई. डोर फोड़ के जाएंगे हम लोग अंदर. समझ जाता है ये कोई तो और ही है जिसके पास घर का चाबी है. बट डोर लॉक. और क्या है इसमें? स्क्रैचेस. ओके, These scratches are fresh. फ्रेश. ओके नाइस. ये दूर से भी You're दिखते हैं. right.
someone I tried to... swear these scratches were not here yesterday. Yes. Our mysterious visitor came here last night. Yes. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. मतलब ये आंटी है भाई, आंटी ने किया तो क्राइम पेट्रोल जैसा जा रहा है भाई. अंदर गया मैं. ए हाँ बेटी. What a terrible way to die. चेस्ट में लूट ले लेते. क्या ये सेलर है, उसका एविडेंस Old रहेगा. navigation instruments, nothing interesting. बराबर. Peter carries boots. क्या था ये? थोड़ी एविडेंस है भाई. और कुछ भी था क्या? कुछ है नहीं. तो एक मिनट, मेरे टीम में डिटेक्टिव मिशन है शायद. बॉडी सबसे बाद में, पहले देख लेते हैं. इधर से उठाया हार्पून. Harpoons for hunting समथिंग whales. वेल, शिप लॉक्स. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years Peter captain था. 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Hey bye. The tooth of a sperm whale. नाइस कैच. इसमें से कुछ मिसिंग है यहाँ पर. सस्पिशियसली एम्प्टी. आउटलाइन देखा. मैं भी खुद एक डिटेक्टिव हूँ. ओके और क्या? आउटलाइन इन द डस्ट. यहाँ पर से कुछ तो मिसिंग है. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book, a box or a small chest, perhaps. ओके. टेबल देखते क्या कर रहा था बकचोद. ये है टोबैको पाउच. बीड़ी फूक रहा था. The initials PC PC have been crudely burned. पीटर कैरी. हाँ A बराबर. sailor's work. फ्लैप ओपन. और एक बार ओपन ना. कुछ है भी नहीं इसमें भाई. क्या है इसमें? कुछ है भी नहीं. ओह This aroma is familiar, but to recognize it. ये कौन सा बक्सोदी है भाई? गैस इससे कुछ बनता है क्या? अजीब ही दिया है यार. ये सब मैं 1 मिनट पे सॉल्व करता हूँ. अभी ये सब गैस बराबर ना. बराबर है. नो अरे बराबर है. क्या फालतू गिरी भाई. यहाँ ये अलाइड नहीं है बराबर. एक अलाइन करने जा रहा हूँ तो एक निकल जा रहा है. वाह ओपी. नाइस जीजी. ये शिप का हार्पून हो गया. तो ये क्या है वो? ये एंगल ही नहीं है. क्या डिटेक्टिव बनेगा मैं? ओके. ये बीच का लाइन. ओ भाई नकली हरकत था ये. घटिया नकली मैं किधर देखा नहीं हूँ. पहले बताना चाहिए था. लोग ऐसा सब होता है. अरे भाई ऊपर नीचे हो गया ना. यस ओके. Yes. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Someone drank from this glass recently. Rum, a sailor's drink.
It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. स्पाइरल बाइंडिंग में कुछ रहेगा नहीं, कुछ है ही नहीं है बुक में बस। बुक का पर्पस नहीं समझा। The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. तो दोस्त भी तो हो सकता है। Some of the evidence can be used in the investigation will be marked. Okay. ठीक है setting. Find the use. They appear to be size 8. Okay. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 8. और कुछ देखने लायक नहीं है इसमें। बॉक्स मिसिंग है। ये नोटबुक कुछ है भाई पक्का। J.A. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Oh, Jason. These abbreviations. मैं पढ़ा ही नहीं। Okay, B क्या था ये B? Find a pair of letter and they will form a detection. Red color signifies unachievable. Ah. Nice idea. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. How to organize the ambush? Okay. The size 8. Okay. किसी को तो पहनना पड़ेगा. The initial PC have been इसमें किसका तो how to organize the ambush? Okay.
इसमें with Lester the mystery. Okay, written for what we explained. Okay. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky And why is that? because of last night's attempted Break break-in. in. बराबर नहीं तो no clues वाला केस होता था. You've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. रेडी है पिस्टल. अभी इसमें ऐसा वेट नहीं है क्या स्काईरिम जैसा? Mr. Holmes? अब एक ही डायलॉग है क्या सब पुलिसमैन को? ये दूध वाला जैसा बुलाते जा रहा है मिस्टर होम्स मिस्टर होम्स. ये फुटप्रिंट है रे, ये वही साइज 8 वाला है. नाइस फुटप्रिंट कैरीज बूट्स बराबर. ये क्या? These boots don't match मैच द फुटप्रिंट्स. ओके, तो ये बूट नहीं है तो किसी और का ही है. अच्छा, इसका सेटिंग हो गया. डायलॉग से पता चला. परहैप्स जाके उससे बात करना पड़ेगा ना. ओके, क्यों से बात करता हूँ आंटी से. ये चेस्ट किधर है बताओ जरा प्लीज. आई गेस यही है ना. अभी क्या देखने लायक कुछ नहीं है. वॉज पीटर अ स्मोकर? Is this your husband's tobacco pouch? यस. I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. ओपी. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. इसको लोकेशन मालूम है, इस पे भी डाउट Thank आ you, रहा है. madam. ओके, मेरे को इतना समझ गया. ए Mr. Holmes? लाइक क्या ही था भाई. ठीक है, क्या करना है भाई? ऑर्गेनाइज We कितने. need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. ओह, ये बोलना भाई. This looks like the perfect hiding place. ये ढूंढने के बाद हुआ क्या भाई? कभी बताएगा ये सब? Shh! Did you hear that? कौन है बच्चा भाई? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. भाई क्या? Mr. Holmes? ओपी डायलॉग भाई. मिस्टर All right, my होम्स. fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocence? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I नकली I नाम है didn't- भाई. Do you deny that you came here yesterday? No, but I yes, it's just that I couldn't
I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not... It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. The ranch. I say In the light of yard. recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like मेरे to को नहीं लग रहा ये question him killer है. tomorrow morning. मेरे को नहीं लग रहा ये है. ठीक है, देखते हैं कल सुबह. स्कॉटलैंड यार्ड, ओके. जल्दी भगाओ रे, फास्ट ट्रैवल. यहाँ पर ही तो जाना है. ये लोग से थोड़ी मतलब है अभी डायरेक्ट. ए भाई, ये भी मिस्टर होम्स बोलता है क्या? Mr. Holmes? नाइस. 10 out of 10. Locked. इसको इंट्रोगेशन रूम मतलब यही रह सकता है. यही क्या? Mr. Holmes? नहीं रे भाई. हाँ भाई, तो पहले ऑब्जर्व मार लेता है. नकली कैप है, शैबी कैप. ये इन नेक, इसका और इसका मतलब क्या है? सिला हुआ कपड़ा, पैच. ओके. ये हाथ में बॉयल्स, कैलेस. ओके, कैलेसेस. गिटार बजाता है क्या भाई? गलत गिटार बजा रहा है. इधर से कैलेस आया तो. शॉर्ट स्लीव्स. ओके. ये बटन, एलाबरेट बटन. ओके. और क्या? पैच देख लिया मैंने. और क्या? दो मिस आउट हो रहा है क्या यार? अभी तक मिर्ची नहीं आई इसको भाई. एक्सपेंसिव फैब्रिक, ये इधर ही आएगा भाई. एक्सपेंसिव पैंट फैब्रिक. यार स्कार्स. ओके. अभी सवाल करेगा. नोटबुक. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. What am I doing here? I've done nothing wrong. वापस बात करे क्या बोलेगा? What am I doing यही here? डायलॉग I've रे. done nothing... ये बहुत नकली है. ओके. She might be hiding something. ये बहुत, ये तो वाह. अरे मैं राइट क्लिक दबाया यार, कैंसिल हो गया करके यार. हट. बे वो है ही नहीं यार. डी सेलेक्ट करना था. ओके. पिन टू वॉल और स्विफ्ट एक्शंस मेरे को जहाँ तक मालूम है. ओके. We need to find out whether an unskilled or untrained man can use a harpooner to kill a full piercing body. Okay. I need to stage a reconstruction. Oh, nice. ये पैसा बहुत मिल रहा है. वॉटसन, अभी वॉटसन. ओ बराबर घर पे जाके ट्राई मारेगा, ऐसा कुछ है क्या?
एक मैप देखना है, टैब। ऑप्शन को मिला है तो मेरे को इधर जाना पड़ेगा, टैब टू प्रिपेयर फॉर। ओके, एग्जामिन बिलोंगिंग्स नेलिगन एविडेंस रूम एट द स्कॉटलैंड यार्ड। एविडेंस रूम मेरे को शायद इंट्रोगेशन रूम बराबर है। एविडेंस रूम किधर है? इंस्पेक्टर लेस्टर्ड, इसका रूम में मैं नहीं जा सकता। आई गेस दिस इज द एविडेंस रूम, बराबर एविडेंस रूम। उसका बिलोंगिंग सही है। These are the sus. A Pocket knife. बराबर। A handkerchief with the initials. ये इसका ही बुक है, रिंग। मर्डर मर्डर To my friend. एंड पार्टनर 1883। ओ ये किसी का बच्चा लगता है। फ्रॉम आर डॉसन R. Dawson. टू माय फ्रेंड एंड पार्टनर 1883। अच्छा ऐसा वो सीक्वेंस में पढ़ना है तो ये ग्रीन रहेगा लगता है। पढ़ लिया ना मैंने ये तो। और क्या है इसमें पढ़ने लायक? और ये बुक The अपन notebook that we found on Pete. These abbreviations mean something, but what? सब लोग का कोऑर्डिनेट्स है ये। ओके, और क्या है? और कुछ नहीं A है। handkerchief with the initials JHN. भाई ये एग्जामिन तो किया, अभी क्या है यार? नकली क्या है? ओह And partner, 1883. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. नाइस। एलिगन कंप्लीट। ओके, टैब। और क्या करना है? ओके जैसे टू बेकर शीट वेयर। शायद मुझे घर पे ही जाना है। वॉटसन उधर घर पे ही बैठा रहता है। ये ओपन डिडक्शन लास्ट एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्ड बराबर। वॉटसन A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? No, but we. A real Miss Peter. It is possible. हाँ But रे if that is the भाई। case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in White. One of the भाई ये मेरा कुत्ता मस्त है भाई। brave Toby. The best nose in the Brit. बस बस ज़्यादा ही हो गया। ये वाइट I चैपल need पूछे। to take a harpoon with me. हारपून किधर से लाऊं मैं? फाइंड अ हारपून फॉर द एक्सपेरिमेंट। कहाँ पर है हारपून? वॉटसन के रूम पे बराबर। नहीं मेरे घर पे मिलेगा। नहीं आई डोंट थिंक सो यार, जाना पड़ेगा वापस। डबल ट्रिपल काम देते ना लो, हारपून लेके नहीं आ सकते यार। My analysis table. It is useful for my work. चाकू है अपने पास, हारपून नहीं। गन है, शॉटगन। ए क्या ये? केमिस्ट्री ब्लड टेस्ट। That is not the one I need. केमिस्ट्री नहीं। एलिगन मिसिंग। ओ
बराबर. The 23rd largest bank in the Britain and its bankruptcy is Here it is. okay. मिल गया. Now I begin to understand that young man's story. Okay. चल मैं आर्काइव में से मैंने उसको उठा लिया. डॉक्यूमेंट एक मिल गया. ओके. मेरे को शायद हारपून लेके आना है यार. किधर जाओ? उधर ही है क्या कि इधर मिल जाएगा हारपून? ठीक है. गन एक बार घर के अंदर ही ढूंढ लेता हूँ मेरे भाई के बाहर ही भेज रहे क्या? हारपून हारपून दिख रहा नहीं है मेरे को दूर दूर तक. अच्छा जा रहा है अभी तक. फ्लो बहुत मस्त है. लेट्स टेक द हारपून एंड गो टू वाइट चैपल जो भी है जगह. हारपून उठाओ. That should do it. Now I am ready. मैप खोलो. मैप खोल के बस. ओके किधर है भाई? वॉटसन. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. ओ भाई. ओ सांस. ए भाई. हाँ. अरे यार थ्रो Holmes, you दूसरी should try बार. to aim better. And ये एम का एक था. होल्ड ब्रेथ दबा के रख के. एंटी. the सीधा. harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. तो दिन ज्यादा लगा नहीं बोल रहा है. गया ना भाई. सीधा बुलजाए. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. बराबर. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. He was possessed. Well, Diabolical yes. luck. Let us leave now. जो किलर था. Right. Okay. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Okay. वापस ही लेके नहीं जा सकता है. भूल जा पिक्चर. हारपून भूल जा. कुछ इंटरेक्टेबल नहीं है. किधर जाना है? स्कॉटलैंड यार्ड में लिखा रहेगा ना. कहाँ पर जाना है अभी? अच्छा मेन क्वेश्चन. बेकर शीट घर पे. नहीं उसको जगह पूछ सकता है. बराबर उसको जगह पूछेगा मैं. बराबर. ओपन डिटेक्शन. बराबर. ओपन डिटेक्शन. क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट जो इसके पास नहीं है. क्या बोलते हैं? पिन टू द वर्ल्ड. बराबर. और कोई क्लूज ही नहीं है. दो लोग का ऑपरेशन दे सकता है. बराबर. बस इतना ही हो रहेगा. और क्या कर सकते हैं? चल जल्दी तो जगह बात करेगा तो मिल जाएगा लगता है. गेम का रैंडमनेस बहुत मस्त है. लाइक हमें ही बहुत कॉन्सेंट्रेटेडली देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है. तो ही वी विल बी एबल टू सॉल्व द केस.
I have heard the story of Dawson. Yes. Joshua- Joshua देखा? Nelligan was my father. देख के समझ I गया. am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My Yes, father was bloke, yes. convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Mhm. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Yes. Gold ring. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? पीटर का I शायद. didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. क्या था भाई? झूठ बोल रहा है क्या? झूठ बोलते वक्त ही आता है. तो my friend बोला है बराबर. You are not his friend. बराबर. क्या बात कर रहा है? You are not his friend. To my The friend police and partner. seized this अरे. valuable ring. I didn't steal it from anyone. बस It चल. has always belonged to me. रिंग. The ring's date of क्या engraving foolish is में many overlook years कर जाओ. ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. बराबर बराबर. Rings owner कौन है? So, Mr. Nelligan, who Who's is the the true owner of the ring? The It's ring scary. is mine. फादर जैकेट कौन सा होता है भाई? अच्छा इसने अपना पापा का कपड़ा पहना. ओके. प्रोफाइल ऑफ द विक्टिम. वापस उस पे ही जा सकते हैं क्या? नहीं यार क्या? So, Mr. Nelligan, who is... The ring is mine. नहीं रिंग्स एनग्रेविंग वापस एक बार पूछूंगा इसको भाई. वो So, Mr. Nelligan, कुछ मिस आउट कर who रहा is हूँ the क्या मैं? true owner of the ring? The ring ये is बहुत mine. एलेनॉयर वाइब्स दे रहा है यार. बहुत एलेनॉयर. No, Mr. Nelligan. I believe अच्छा that the ये ring अपन had belonged उस to पे your इम्पोज father. कर रहा है भाई. मेरे को लगा एक वेल नोन फैक्ट रहेगा How do you उसको know? बोलना है और The उसको jacket you are जस्टिफाई wearing करवाना is है. made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich Rich man, man. Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your Oh, hands bye. often while working. Oh, I gee. can tell from the scars. I'm One side मचा speechless, दिया. Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. मेरे को ऐसे थोड़ी मिस्टर होम्स करके बुलाता है पुलिस वाला भाई. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at The sea sea in in the Norway. Norway, there is definite. definitely What am I doing here? अरे भाई सेम डायलॉग बोल रहा. शिप्स लॉक. इधर जाना पड़ा. शिप्स लॉक फ्रॉम बट ओ वापस घर पे. एक केस के लिए इतना भागम दौड़ करना पड़ता है यार. शे सीधा फास्ट ट्रैवल भी एकदम नकली बना के दे दिया है लोग ने. के मैप इधर वुडमैन लीस बराबर. कुछ है कुछ क्लू ओपन अप ही नहीं हुआ बराबर. जाने पे समझा क्या है. पहुंच गया मैं यहाँ पर. लेट्स सी. $1883. That's the one I need. नाइस उठा ले. This is the crew list of the Sea Unicorn.
This is the log notes for June. Nothing unusual. Log notes for July. Log notes for August. These pages have been... There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. बराबर। कहाँ पर जाओ, कोई सेलर बचा है कि नहीं देखने के लिए। A piece of stock in Canadian Pacific Sierra in the sea. Okay. जाऊं किधर, ये आर्काइव ढूंढने जाऊं किधर? Wiggins might help to find the crew. He should be somewhere at Bacon Street. Baker Street जाना। कुछ अनलॉक नहीं हुआ है। ठीक, जल्दी जा रही, घटिया सीन दिखाने का जरूरत भी नहीं था, डायरेक्ट फास्ट ट्रैवल, फटफट केस खत्म। Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. I have only to find them. I think that if you pretend you're from Scotland... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. And whom? The secret... Ah, you mean young... Yeah, those... How will you... There is always a watch beneath our window. ओ भाई, ये क्या दिख रहा है मुझे? नहीं, बहुत गलत सीन हो गया। कॉल भी कीजिए के। मुझे लगा टेलीस्कोप से कुछ देख के बोलना है। Wiggins, could you come upstairs, please? ये पुलिस वाला बंदा है। At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big नहीं, Oliver कोई from तो our अलग ही gang. बंदा है। He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. एक इसमें इसने बंदे ने गेम Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there मुंह shortly. में से ऊपर ही निकल के बोल रहे भाई। जॉन एलिगन वापस एट योर सर्विस। ओके, मीट इंस्पेक्टर एट द स्कॉटलैंड यार्ड। ओके, बराबर। कुछ है भी नहीं लगता है। हाँ, ये सब पॉपअप होएगा। We haven't got any new leads. Let's see. भागते भागते आ गया। Mr. Holmes, As always, what happened? we have a new suspect, Liam Liam Hurtley. I'm Interesting. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes, he refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one... Do you have it? Of course. It's in the evidence room. At पहले your evidence disposal. देख के आते। Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? तो क्यों मदद Breathtaking. मांगता है भाई? होम्स Mr. Holmes? मस्त बंदा है। एविडेंस क्या लिखा है उसने? बंदे These का are बिल। the suspect's belongings. ओ, इसका फुटप्रिंट है, इसका फुटप्रिंट है। Liam ये ले लो। Hurtley's old boot. ये क्या है भाई? ये stained letter। Stains are fresh. They can be removed. A pen. पेन। These are the suspect's belongings. कुछ है भी नहीं ना थैली पे। जाके इन्वेस्टिगेट कर दे। इधर इंट्रोगेशन रूम पे आना चाहिए वो। इधर नहीं है। लियाम हर्टली। Please escort this Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. Okay. I've already told the police that I've nothing to say.
And you're not even part of the police. Precisely. खुद को And छावा समझ considering रहा है your भाई. situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. मालूम है रे. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. फोड़ना पड़ेगा लगता है इसको. नहीं. कान साफ नहीं है इसका. कान में मेल है. नहीं. Not the right. नकली कैप पहना एक. गार्डनर. प्लान्ड असैसिनेशन है. ये क्या है? हैंडकरचीफ विथ क्रेस्टेड. नहीं बोलूंगा मैं वो शब्द. अश्लील गेम है ये बहुत. ओल्ड स्कार और कुछ तो मिसिंग है भाई. ओके मिसिंग है. Woods है. Plant remains. Okay. ये दिखा ही नहीं मेरे को. That's all for now. बस इन्वेस्टिगेट सस्पेक्ट. एविडेंस रूम में जाके मुझे सिर्फ ये देखना था हैंडकरचीफ पे क्या है. These are the suspect's belongings. NH. A handkerchief with the initials. अच्छा इसमें इनिशियल जो ही था बराबर. अभी क्या करना है? टैब. शायद मुझे क्यों लेडी से बात करना है शायद. आई गेस. हाँ बराबर. पहले तो अपने को बिकर शीट जाना पड़ेगा. अपने पास केमिस्ट्री लैब है उसमें. दो लोग ही है रे. पक्का है. मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा. टेंशन मत ले. मैं आ गया. वॉटसन क्या चाय पी रहा है भाई. A new suspect. But this one... बस. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to भाई perform a बचपन से chain केमिस्ट्री में reaction. बहुत वीक हूँ. ठीक है. क्या First करूँ? condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. ओके ब्लू से स्टार्ट करना है. ब्लू से हमेशा थर्ड है तो ब्लू. पहले ब्लू फिर और एक ब्लू और एक ब्लू फिर थर्ड बचपन में वो वाला सवाल जैसा आता था ऐसा. ये ग्रीन बच जाएगा. Something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. ओके मेरे को 7 का 7 यूज़ करना है बराबर. भर दे वापस. ये गलती किया मैंने. ओके सॉरी माय बैड. ब्लू ब्लू अगला ब्लू अगला ब्लू. ओके फिर क्या बोलते हैं कलरलेस रिएजेंट आफ्टर ये तो ग्रीन अभी. फिर 2 ऑरेंज. फिर क्या बोलते हैं डायरेक्ट कलरलेस. क्या कुछ भी केमिस्ट्री देते हैं यार ये लोग. पिपेट ब्यूरेट देने का एकदम इंडियन स्टैंडर्ड्स. ये क्या बोल रहा है? I didn't do something wrong.
अच्छा अच्छा, एक ही आइडिया मेरे पास, वाटा देने का ऐसा बन गया रिएजेंट. I did ask you as I hit them, but I don't know. Okay. Sure, and hit them well, but I beg you to reconsider. Dash dash I dash SW. Remember our vows, which you won't leave me. कोई तो लवर है. गार्डनर और आंटी का चल रहा है कुछ अफेयर, आई गेस. के बॉन्ड सर्टिफिकेट इन द कैनेडी. हाँ बराबर. ए भाई मुझे वुडमैनली जाना ही पड़ेगा शायद. और ये भी उधर यूज कर सकता है. बॉन्ड सर्टिफिकेट, फाइंड अ पीस ऑफ एक्सचेंज, इट वाज फाउंड इन द सीन बाय द पीछे से विंडो. कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, यहाँ पर कैसे जाऊँ मैं? कैनेडियन पैसिफिक रेलवे घर पे बाजू में मिले. ठीक है, पहले घर तो जाना ही पड़ेगा आई गेस. कोई इन्वेस्टिगेट ये लेडी को करना है. ये बहुत लंबा इन्वेस्टिगेशन जा रहा है आई गेस. A new suspect, but this one refuses to. बेकर शीट में ही है. मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ है इसमें? नहीं. ये क्या है भाई? नो गार्डनर. मेरे को तो ये क्वेश्चन करना है, ये गार्डनर है कि नहीं? घूमना पड़ रहा है एक केस के लिए भाई. क्या बोलूं? चौकी में बुला देने का सबको एक साथ. लियाम हर्टली. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. झूठ बोल रही है, आँख से समझ रहा है. Thank you, madam. Who could do such a thing? क्या ऐसे थोड़ी होता है भाई? मेरे को लगा मुझे कुछ लीड मिलेगा यार. बक. अरे घर वर भी खुल रहा नहीं है. हाँ मेरे पास बूट्स है ना भाई, मैं भूल ही गया. These परफेक्ट. boots match the footprints exactly. यस. बूट्स भी हो गया. ठीक है. कहता एग्जिट बराबर. टैब. और अभी क्या था? Did you ask and hit them well, but I beg you to remember I have done nothing. Which you dash me. Deselect. ये दोनों ने मिलके अंदर आया होता तो मालूम है मुझे. शायद इसने हाइड. क्या बात है रे? वो टिन बॉक्स इसने हाइड किया. लियाम हर्टलीज लेटर मिसिंग. तो मिसिंग टिन बॉक्स. लियाम हर्टलीज लेटर. नो गार्डनर नहीं. क्या है यार? F1 हेल्प. ओके. ये थोड़ी क्या कुछ भी. हाँ भाई. हाँ बराबर. नो गार्डनर बोले हो. गार्डनर है.
मिला कि नहीं भाई? लीड मिला कि नहीं? यस, अभी जाऊंगा। ज़्यादा लीड्स नहीं, मेरे को स्टॉक एक्सचेंज में जाना ही पड़ेगा। स्कॉटलैंड यार्ड में था क्या? ओके, यहाँ पर कुछ लॉग वॉग मिलते हैं? यहाँ पर लॉग नहीं है। At your service, Mr. Holmes. बे वो किधर मिलेगा यार लॉग? क्या है ये? खुल गया भाई। इसे पूछूंगा, मदद कर दे भाई मेरी। How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea? ए भाई, a piece of stock exchange belonging to the Canadian Pacific Railway। ठीक है, ये लियाम हर्टली को अभी देके पूछूंगा भाई, वो दे दूंगा। Please escort this. बस अभी तो आ रही, आड़े में लेता हूँ तेरे को। What did you hide? So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? हर्टली लेटर भाई, इतना येड़ा समझ के रखा है मेरे को। I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one. But it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. Mm-hmm. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Hurtley's boots. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Gardening. Because you are the gardener at Woodman's Lee. No. I'm not. How did you? I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. और वही वो उसके बुक में भी था. All right, you got me. That's all for now. Hurtley's stories are false leads. But now I know one thing for certain. Okay, we're getting close, brothers. See the map जाए Woodman's Lee. कुछ नहीं है extra lead, I guess. जाके I have seen that symbol in your gardener's kerchief. ऐसे सीधा इसको बोल दूंगा मैं. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Thank you, madam. इधर बहुत important clue what मिली could है. be hidden here. पहले ये एक्टिवेट कर देगा ना. अंदर जा रहा क्यों नहीं है ये?
Sets floor. Oh, 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 oh. मिल गया ना बॉक्स भाई. True detective. Let us see what is in this box. ये बहुत नकली पजल दे दिया भाई. Rotate all. Rotate switch. ए बहुत नकली कलर कॉम्बिनेशन है यार. Okay. Letters. A bundle of letters in a woman's hand, with the Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. पहले डिटेक्ट कर दिया मैंने. हा 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 हा. पहले डिटेक्ट कर दिया. पहले बोल दिया भाई क्राइम पेट्रोल. सीधा भी उसको जाके आप आ जाओ स्टेशन को आंटी. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. What are you talking about? The crest. Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. ये एक्टिंग सब कितना देख लिया मैंने. चल निकल. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. विगिंस ये किधर रहता है भाई. विगिंस मेरे घर पे रहता है ना. अरे भाई इरिटेटिंग. कुछ डिटेक्शन आ रहा है. यस 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 यस. जुडिथ कैरीज का. ओह नाइस. न्यूरॉन बन रहा है. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well, Hugh Patton's James Lannister, Helmsman, Harpooner, Rolf, Pablo. He died a week ago. this is interesting. Let us review the other sailors now. This is interesting. This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Peter Carey, बराबर. हाँ. वो बोल. हाँ. Wiggins, could you gather some information on... Sometime later. We found Patrick. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the sea. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank. किल्लर के लिए काम किया बंदे ने. पीटर कैरी है नॉन स्मोकर. पैट्रिक के नया लीड. ओ एक होते ही भाई 4-5 न्यूरॉन फट गया. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. सॉरी. ये मेरे रूम था ना. नहीं वॉटसन का रूम है.
बाहर का रास्ता है, मेरा रूम इधर है। सेलर आउटफिट, सेलर आउटफिट। Now I can approach Cairns. नकली मैकेनिक से भाई। ओके so let's end it here. Meet you in the another walkthrough video.